In the name of Allah, who is most merciful, most beneficent, dear viewers, today I welcome you to my channel, Al Noor YouTube channel, and today I'm going to introduce my new video. Before starting the videos, I would like to explain that the YouTube videos, making the YouTube videos is my passion, but my profession is homeopathy. So I would like to explain one very useful homeopathy medicine with you that you can use at your home. So viewers, before starting the video, I would like to request you that please subscribe my channel, like my channel, and click on bell icon so that you can get the all my new videos notification. Dear viewers, as a homeopathic practitioner, I have used this medicine with many patients, and I got very good results. So I would like to share this medicine. I will show you. This is the DP13. I will show you. So this medicine is very useful for the trembling of hands and pains in the joints, pain in the bones. It is very useful medicine, and it has no side effects because it's a homeopathy medicine. You can use it easily, and if you want to get more effectiveness, you can use the cup of tea after using this medicine. This is also a good medicine for the pain in your body, and also for the fever. This is a good medicine I have given to many patients, and they uh, get well within very short time period. And as far as the dosage of this medicine, you can use it 10 drops with a little amount of water, in like quarter cup water, and you can use the 10 drops in that water, and use it 2 times in a day or 3 times in a day. If you want to get the more effective results, you can use the cup of tea, and you have to uh, reduce the use of all the things which are spices and the fats. You have to reduce the use of such type of things. You have to reduce the potatoes and rice, so then you can get the बेटर रिज़ल्ट ऑफ दिस मेडिसन. और अब नाजरीन मैं आपको अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा इसको उर्दू में कि ये एक होम्योपैथी मेडिसन है. यूट्यूब जो है वो मेरा शौक़ भी है और पैशन भी है, और होम्योपैथी जो है ये मेरा प्रोफेशन है. तो नाजरीन, आज मैं आपको इस मेडिसन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा. DP13 ये जोड़ों के दर्द और पट्ठों के खिंचाव के लिए, गंठिया के दर्द के लिए बेहतरीन दवा है. इसके अलावा ये बुखार वगैरह पे भी बहुत इफ़ेक्टिवनेस है इसकी, बहुत अच्छा असर होता है. टेंशन वगैरह के लिए और कमर दर्द वगैरह के लिए भी बहुत ही इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं. अभी तक जितने पेशेंट्स को मैंने यूज़ करवाई है बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने दिया है. तो नाज़रीन, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आप तकरीबन 10 कतरे एक बूंद पानी में, यानी कह लें कि एक चौथाई कप जो है पानी, उसमें 10 कतरे ये इसके डाल के तो उसको आप इस्तेमाल करें दिन में 2 मरतबा या फिर 3 मरतबा. और इससे ज़्यादा बेहतर अच्छे नताइज लेने के लिए बेहतर है कि आप जब इसको इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के बाद नाजरीन, अगर आप एक कप चाय का ऊपर से पी लें तो इसके और भी अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं. नाजरीन, होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा. बहुत से ऐसे काम
جو ہم گھر میں کرنا چاہتے ہیں ہم گھر میں وہ چیزیں تو لا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن جب انہیں استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اڑوس پڑوس میں یا کہیں بھی. تو ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا. مثلاً یہ اسٹیتھوسکوپ ہے، اس کو کیسے یوز کریں گے. تھرمامیٹر ہے جی، اس کو گھر میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. بی پی آپریٹس ہے، اسفیگمو مینومیٹر اس کو بولا جاتا ہے جی، بی پی چیک کرنے کے لیے. تو ان سب چیزوں کو آنے والی نئی ویڈیوز میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتا رہوں گا. امید ہے کہ میری یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.